Hello and welcome back. This is Dr. Geetanjali Pareek. As I have promised you earlier, we would be talking about domains of cognitive psychology in this episode of mine. But before doing so, I would just like to say there had been some few students who had been referring me, asking me to have something in Hindi also. So in this video, I will be using both the languages, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी और समझाऊंगी, क्योंकि उससे ये डिफ़िकल्ट होगा कि भाई इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने जो भी अटेम्प्ट करने हैं पेपर्स दैट वुड बी ओनली इन योर इंग्लिश लैंग्वेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जब हम बात करते हैं डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी, तो डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी में जो होता है लोग एकदम ही होता है डोमेन्स, व्हाट इज डोमेन्स. तो डोमेन्स आर नथिंग, घबराने की कोई बात नहीं है. दे आर नथिंग, दे आर जस्ट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी. कहाँ पे हम अपनी कॉग्निटिव साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ बीइंग कवर्ड अंडर योर डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वैसे तो बहुत सारे हैं, देयर आर 12 मेन एरियाज या डोमेन्स जहाँ पे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हम अच्छे से यूज़ करते हैं. तो द फर्स्ट जो एरिया है दैट इज़ योर कॉग्निटिव न्यूरोसाइंसेस. कुछ सालों से ये हो रहा है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आपके जो पहले तो ये होता था कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट होते थे एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट होते थे, दे डिफरेंट होते थे. पर उन्होंने अब आजकल उनमें ज़्यादा अच्छा कोऑपरेशन हो गया है, क्यों, एंड दे आर हेल्पिंग both, means they are helping each other more than they used to be in the others. क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं जब भी कोई कॉग्निटिव फंक्शन होता है, तो किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं. सिमिलरली जो कॉग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट होते हैं उनको ये तो मालूम है कि क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, बट उसका रिजल्ट वो क्यों हो रहे हैं, किस लिए होते हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो इसीलिए कॉग्निटिव न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और cognitive psychologists or cognitive neuropsychologists, they are now collaborating with each other to study more about what is cognitive psychology. Second जो एरिया हमारा आता है that is your perception. जो परसेप्शन है, मतलब परसेप्शन होता है, हर एक का परसेप्शन डिफरेंट होता है. तो इट इज़ नथिंग बट योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसरी स्टिमुलाई. नाउ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड परसेप्शन हमको पता चल जाता है कि पर्सन कितना सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर सिग्नल्स के लिए. आपने देखा होगा ना, कुछ एक पर्सन हैं वो जैसे शोर हो रहा है, कुछ लोग बहुत रिएक्टिव एकदम ही करेंगे, ये क्या शोर हो रहा है, इतना नॉइस हो रहा है, कई लोगों में बिल्कुल भी इनको अफेक्ट नहीं करता. सो द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ परसेप्शन है, हम हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई मैनी पार्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस. परसेप्शन इज नॉट ओनली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो द अदर फैक्टर्स विच आर included in your cognitive psychology that include the pattern recognition, attention, consciousness and memory. तो next आता है आपका that is the third point, that is your pattern recognition. जो pattern recognition है उसको हम एक sensory, एक unit के form में हम नहीं ले सकते. It is actually जैसे सपोज करो हमने सेंस देखते हैं, सुनते हैं, see, hear, feel, taste, etc. or smell. These form a part of a complex pattern that is your sensory stimuli. So suppose करो आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, या ये कुछ देख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आपका, जैसे मैं यही पढ़ रही हूँ आपका डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सो दैट आई जस्ट गॉट टू नो कि भाई ये पॉइंट्स मैं कवर कर रही हूँ. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि हम जैसे कोई भी किसी कहते हैं ना, एक हमारा हिंदी में मुहावरा भी है, काला अक्षर भैंस बराबर, मीन्स टू से वी डोंट अंडरस्टैंड दैट द लाइन्स डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस. सेम इज़ अ केस जो एक लर्नड पर्सन है, तो वो उसमें क्या करता है, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप पहले उन वर्ड्स का पहले आप मीनिंग इंटरप्रेट करते हो, तो फिर उसको आप करते हो असेस. पहले तो आप उसको देखते हो, फिर उसके बाद में उसको असेस करते हो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग था. देन उसको आप एक होल में एक शेप देते हो वगैरह, एंड देन यूज़ इट. बट ये आप देखो, इसमें मैंने डिस्क्राइब करने में इतना टाइम लगे कि पहले हमने उसको देखा, फिर इन्फॉर्मेशन गई एंड दिस, बट हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, इट इज़ सो पावरफुल, इट इज़ सो वो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है. और ये जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग जो इतनी फास्ट है, इट इज़ नॉट ओनली इन सर्टेन भी कोई रेयर केस हो गया, उसमें पर्सन में ये हो गया कि अरे इसकी इतनी वंडर से एक सेकंड में इसने इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर ली. इट इज़ नॉट लाइक दैट. समथिंग हम बहुत मावल करते हैं ना, अरे कंप्यूटर इतना फास्ट कर लिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये सभी इंडिविजुअल्स के साथ हो रहा है, ओनली अबाउट
कभी इनमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो, उनको आप छोड़ दो, बाकी सारे लोगों में कितना फास्ट ये प्रोसेसिंग हो रहा है. तो isn't it so wonderful? So that is area is also being covered under your cognitive side. जो नेक्स्ट हमारा आता है that is your attention. अगर आप देखा जाए ह्यूमन बीइंग्स है, हर वक्त कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं. अभी भी इस वक्त भी कुछ आया, आप मेरे थ्रू कर रहे हो, आप मेरे से लर्निंग ले रहे हो वगैरह, पर जो भी है आपके आसपास की भी कोई सिनेरियो है, अरे गर्मी बहुत तेज होगी, तो दैट इज दिस इन्फॉर्मेशन इज गैदरिंग, इट इज बीइंग अक्यूमुलेटेड. जैसे आपने अगर स्टडी भी अगर आप देखोगे कहीं पे पाओगे, यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ सिग्नल्स, देयर सेंसरी इनपुट्स दैट आर बीइंग bombarding your body. जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, दीज वी कंसिडर एज कॉन्स्टेंट व्हेन वी डू नॉट गिव मोर इम्पोर्टेंट, बट दैट इज देयर. तो इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपके. एक तो आपका हो गया सेंसरी, दूसरा हो गया कॉग्निशन. जो सेंसरी में अगर सपोज करो आपको ज़्यादा है, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज यू विल हैव दैट ओवरलोड. अरे यार, सिमिलरली अगर आपको कुछ चीज़ ज़्यादा ही आपका इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करनी है या मेमोरी पे आप ज़्यादा स्ट्रेन करते हो, देन इज अगेन ओवरलोड हुआ है. और हम सब लोगों बाग एवरी ईच वन ऑफ अस पास थ्रू दिस सिनेरियो, वी हैड दैट एक्सपीरियंस कि भी वो ओवरलोड कैसा. नेक्स्ट थिंग है दैट इज योर कॉन्शियसनेस. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू बी हैपन इज बिहेवियर्स यूज्ड टू इग्नोर. अरे कॉन्शियसनेस is not something which should be studied under cognitive psychology or psychology as such. तो उसको बहुत इग्नोर किया जाता था, बट इट डज हैव वैल्यू, और आजकल उसको काफ़ी लोग बस स्टडी करते हैं, जैसे सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में वगैरह. सपोज करो अगर आपने पढ़ रात को, इंग्लिश वालों को तो ज़्यादातर लेट टाइम में मिलता है, और रात को 11 बज रहे हैं, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो, जो आपका सारा अटेंशन वहाँ पे था, ऑल ऑफ अ सडन यू सी अ वॉच, और कहीं पे क्लॉक पे आप देख रहे हो देयर 11 o'clock. सो व्हाट योर इमीडिएट रिएक्शन वुड बी? योर इमीडिएट रिएक्शन वुड बी, अरे 11 बज गए, अब तो लेट होने वाला है, मुझे सुबह ऑफिस के लिए जाना है, कॉलेज जाना है, वट एवर यू आर डूइंग इट, ठीक है, या अभी मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, मेरे को कल एग्जामिनेशन के लिए था, थिंग्स लाइक दैट. तो आपका जो इंटरनल कंडीशनिंग है, इट इज नॉट ओनली एक्सटर्नल कंडीशनिंग दैट डिफाइन यू, बट योर इंटरनल कंडीशनिंग ऑल्सो डिफाइन यू. तो आपका जो रिएक्शन है उस सिचुएशन में डिफरेंट हो जाएगा. आपकी लर्निंग आप या तो हरीडली करोगे, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, या फिर आपका कुछ इग्नोर करके आप उसको, मतलब जो आपका प्रोसेसिंग है, चाहे आपने सोचा होगा ये पढ़ना है, बट यू हैव सर्टेन इन माइंड, आप accordingly change कर लोगे. So consciousness is equally very important area that's being covered under cognitive psychology. Next important area that comes into play is your memory. जो memory है और perception है, they work together. So the information जो आपको available होती है that comes from your sensory sensations or the perceptions, and that is being stored in your short term, मतलब थोड़ी देर के लिए हुआ, then it goes into your long term. So three things that are come into play is your perception, your short term memory, and then the long term memory. Long term memory है, इसमें जो भी है, especially हमारी जो languages and language abilities etc., that is mostly in your long term memory. तो जो भी हम जैसे पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी है, तो उसको हम मेमोरी में जाके देखते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो जो भी कोई पैटर्न हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं, अरे जब ये पैटर्न हुआ था तब ऐसा ऐसा कुछ हुआ था. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ना पिछले साल आप क्या कर रहे थे इस टाइम पे, तो चाहे उस वक्त आपके अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट देयर इन योर कॉन्शियस लेवल एट दिस टाइम, बट यू जस्ट इमीडिएटली मूव बैक, आप अपने 2 साल पहले या पिछले साल आप चले जाओगे और वहाँ पे इसको सोच के बता दोगे एकदम ही अंडर फ्यू सेकेंड्स कि भाई मैं ये कर रहा था, आई वॉज डूइंग दिस थिंग, आई वॉज एंजॉइंग माई हॉलीडे, और मैं इस कॉलेज में पढ़ रही थी, या वट एवर इट इज. तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट एरिया जो आ रहा था दैट वाज योर मेमोरी. सो मेमोरी इज ऑल्सो बीन एरिया विच cognitive psychologists study a lot. Next area that affects us is the representation of knowledge. How we जो भी हम knowledge collect करते हैं from there, that is being stored under certain means a construct or in the form of certain symbols. What is being referred to as a representation of knowledge. Now each so there are two things which form the first is your conceptual representation of the knowledge, and secondly the how the brain means to say stores and processes your information. Now each individual has his own representation of knowledge, whatever thing it is something like this. For example, if you have to talk about sun melon, let me give you an example.
So if the person is eating it for the first time and sees it, so he will say it is golden in color and something like the muskmelon. That is a representation. Had the person means to say never means to say melons is mostly in the Arabian countries or towards the Rajasthan side, but not in the other parts of the world. So if the person is from the Afghan or something and he is seeing the melon for the some time, he would definitely, it is something like the sun melon, but its color is green or something in muddish color. So the perception, the representation of how the person stores his information, it varies from person to person. That is very important again. So you might store your information or the representation. Now some people store that information in the form of mathematical symbols, or some in another form. Whatever the representation is, that information is stored in your structural webs, this cognitive webs. Now that storage of information is very much similar to all the beings. Next is your imagery. Now imagery means to say is something like it's the mental images of the environment, or if you have to ask me, like imagery is something like your cognitive maps. Just like you have Google Maps on your Android or iPhones, same way we have our cognitive maps. Now if you study someone is able to study the cognitive maps of the individual, definitely he or she can drive out certain cues how this person is going to respond in the future. Another area which is covered equally in well is your languages. Now languages means to say each person has different kind of a language upon his heritage or the cultural background the person is. Now there are so many different languages globally. If not globally, let's talk about India itself. Fine. But the way the language is developed in an individual from a child to adults, and how it forms a representation, that is very unique. Now each and every person uses language not only to define himself or to for his needs, but also to express his knowledge. So this is a great area of concern, and the language similarly language processing is as an important component of the information processing and storage. Now it influences each one of us, how the language is developed, how it has its cognition, how it has been stored. Now you might have found like the different people react differently in their language areas also. Next is your developmental psychology. Now if you have to study about developmental psychology, now it's very important factor, because you must have seen yourself also, your reaction or your understanding of a problem or a situation varied from when you were a small kid to a grown up and to the position now. Even the adults vary differently, or they act differently to different situations. So that's what the concern of developmental psychology, which you would be studying in your first year itself. Next component is your thinking and concept formation. Now if you ever have seen, the human beings are being described as the thinking beings. Means to the other animals, they do not think, but definitely human beings give thinking it's something like a jewel in the cognitive psychology. Same is the case here also. So thinking is a process by which new mental information or new mental representation is formed through the transformation of your information. So how it is takes place, how the thinking is there, how the concepts are formed, and how that defines an individual, that forms the parts of your cognitive psychology. Last but not the least is your human and artificial intelligence. Now the human intelligence includes what? It includes your ability to acquire information, recall it, and use that in knowledge whenever it's required, to understand concrete, you can say, concepts and relationship among different objects or situations or the ideas, and to understand the language, to follow the instructions accordingly, and to convert the verbal descriptions into actions, or to behave according to the rules and regulations, and to use knowledge in a meaningful way. That's the main goal of your human intelligence. Now that intelligence is being utilized in your artificial intelligence or your computer sciences. That's how we are making the
computers or designing it so they behave more like human beings. So there also we are using our cognitive psychology to perfect those robots so that they can behave or simulate like human beings. So that was all about your domains of cognitive psychology. So I think so now you might be having a better understanding of like what all areas of cognitive psychology are. And if you have any query, you can just come and write down in the comment box, and do like and share in my channel as a form of gratitude, if not something else. And after that, in the next topic we would be covering is the brief history of cognitive psychology. Right. So we will be covering the brief. We will be talking about the different factors, and then we will complete our